हाय हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे। इन प्रीवियस क्लास वी completed ayurveda nirupana, dravya nirupana. Today we are going to discuss about the third topic of padartha vijnana paper 1, that is guna vijnaniyam. Guna vijnaniyam, this is the third topic. Okay, in this guarantee questions 10 mark पक्का आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक पक्का आएगा 100% श्योरिटी के साथ। एमसीक्यू आएगा, 5 मार्क्स भी आ सकता है, पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है 100% श्योरिटी के साथ। ओके, वी डिस्कस गुण विज्ञानियम इन डिटेल। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। इट इज द सेकेंड पदार्थ सेड इन दर्शन। मैंने बोला था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। इट इज द सेकेंड पदार्थ सेड बाय द दर्शन एंड थर्ड पदार्थ सेड बाय द आयुर्वेद। सामान्यं च विशेषं च गुणानि, सामान्य विशेष गुण, थर्ड पदार्थ अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। गुण इट डिपेंड्स ऑन द्रव्य। अरे एक गुण गुण होना चाहिए, तो गुण किसमें होता है? सब्सटेंस में ही होता है ना। एक द्रव्य का क्या होता है? गुणा होता है। इसलिए गुणा क्या है ना, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द्रव्य। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द्रव्य। एवरी द्रव्य, एवरी सब्सटेंस हैज इट्स क्वालिटीज। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स क्वालिटीज। That may be औषध द्रव्य, that may be ahara द्रव्य, but what it have? It have quality, it have guna. Okay, that is called as guna. Okay, in the introduction, nirukti guna amantrane, guna amantrane, that which attracts towards it, that which attracts towards it, that is called as guna, that is called as guna. गुण्यते बध्यते अनेन इति गुणः। बध्यते, बंधना, that which binds, that is called as guna, that which binds, and the characteristic it which it attracts towards it, that is called as guna. It is the characteristic by which the people are attracts towards it, attracts towards it, it is called as guna, and that which binds, it is called as guna. देखो एक सुंदर सा गुलाब का फूल है, अच्छे दिख रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या करते हैं? इट्स गुना, इट अट्रैक्टिंग द पीपल बाय इट्स स्मेल एंड ब्यूटीफुलनेस, दैट इज कॉल्ड एज गुना. ओके, लक्षण समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः. समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः. गुण ऑलवेज समवायी कारण. समवायी मीन्स always intimate relation with dravya, always intimate relation with dravya, it depends on dravya. And nischesta karanam gunaha, चेष्ट नहीं है, डिवाइड ऑफ कर्म, डिवाइड ऑफ कर्म, दैट इज कॉल्ड एज गुणा. अतः द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुण निष्क्रिया गुणाः. अतः द्रव्य आश्रित, अतः द्रव्य आश्रित मीन्स it guna always depends on dravya, guna always depends on dravya, and it is devoid of qualities and devoid of any action, it is called as guna, it is called as guna. Guna paryayavat dravyam, guna is the synonym or paryaya of the dravya. Gaunatvat gunah, guna always depends on dravya only. Hence, we conclude that guna has 5 lakshanas. They are dravyashrayatva, guna is always depends on dravya. Cheshtarahitatva, it is devoid of any action. Nirgunatva, it is devoid of any qualities. And asamavayi karanatva, interrelationship with dravya. And vishwa lakshanatva, these 5 are lakshanas of guna. Okay, now we discuss guna beda. Guna beda, according to Acharya Charaka, in Charaka Sutra Sthana explained 41 gunas. How many gunas?
41 gunas, important for MCQ, okay. 41 gunas, they are divided into adi bhautika and adhyatmika. Adi bhautika guna and adhyatmika guna. Adhyatmika guna, it is also called as atma guna. It is also called as atma guna. They are 6 in number. Adi bhautika guna, it's again divided into sartha guna or vaisheshika guna. Sartha guna or vaisheshika guna, they are 5 in number. Samanya guna, it is again divided into two types. They are Guruvadi guna and Paradi guna. Guruvadi guna 20 in number, Paradi guna 10 in number. Okay. Now we discuss types of guna. They are 41 in number. Okay. 41 in number, said by Acharya Charaka in Sutrasthana first chapter. Okay. They are 41 guna. Among them, Vaisheshika guna, 5 in number. Vaisheshika guna are also called as Sartha guna. Vaisheshika guna is also called as Sartha guna. They are Mahabhutanikam Vayu Agnir Apaha Kshitistata Shabdah Sparshascha Rupam Cha Raso Gandhascha Tadgunah. These are gunas of Vishesha guna of Pancha Mahabhuta. They are Shabda, Sparsha, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa and Gandha. Rupa, Rasa and Gandha. Now here Shabda is Vishesha guna of Akasha. Kam means, which means Akasha. Sparsha is Vishesha guna of Vayu Mahabhuta. And Rupa is Vishesha guna of Agni Mahabhuta. And Rasa is Vishesha guna of Ap Mahabhuta or Jala Mahabhuta. Up or Jala Mahabhuta. And Gandha, it is a Vishesha guna of Prithvi Mahabhuta. These are Vishesha guna or Vaisheshika guna or Sartha guna, 5 in number. Remember this. Now, Paradi guna. Paradi gunas are 10 in number. Paradi gunas are 10 in number. Paraparatve yuktischa sankhya sanyoga evacha vibhagascha prutaktvascha parimanam atapicha संस्कार अभ्यास इत्यते गुणप्रोक्ता परादयः. गुणप्रोक्ता परादयः. They are para, apara, युक्ति, संज्ञा, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार and अभ्यास. संस्कार and अभ्यास. Para means parness, apara means nearness, yukti means application, sankhya means number, sanyoga means combination, union, vibhaga means disunion, pruthakva means separateness, parimana means measurement, samskara means tendency, abhyasa means repetition. These are 10 gunas of paradi guna. These are 10 paradi gunas. Now Guruvadi gunas, they are 20 in number. They are 20 in number. They are Guru Manda Himasnigdha, Guru Manda Himasnigdha, Slakshana Sandra Murdustiraha, Guru Manda Himasnigdha, Slakshana Sandra Murdustiraha, Gunaha Sa Sukshma Vishada, Vimshati Sa Viparyayaha. These 10 gunas and opposite to that,
10 gunas. Total vimshati guna. These are called as vimshati gunas. These are also called as vimshati guna. Vimshati guna. Vimshati means 20 gunas. दे आर गुरु का अपोजिट हेवी हो, गुरु का अपोजिट क्या है? लघु. गुरु लघु. हेवी लाइट. मंद ब्लंट एंड तीक्ष्ण. मंद तीक्ष्ण. ब्लंट एंड शार्प. हिमा कोल्ड, उसका उसका अपोजिट क्या है? उष्ण. कोल्ड एंड हॉट. स्निग्ध अनुच्चुवस एंड रुक्ष. अनुच्चुवस एंड ड्राई. श्लक्ष्ण स्मूथ एंड करा. श्लक्ष्ण करा. स्मूथ एंड रफ. सांद्र द्रव. कॉम्पैक्टनेस एंड फ्लूइडनेस. मृदु कठिन. सॉफ्ट एंड हार्ड. स्थिर स्टेबल. चला मोबाइल. स्थिरम स्टेबल में स्टेबल रहता है और चला इट हैव द मूवमेंट. ओके. सूक्ष्म माइन्यूट स्थूल ग्रॉस. विषद clear and pichila means sticky. These are 20 gunas of Gurvadi guna. It is also called as Vimshati guna. It is also called as Sharira guna. Okay. Now, Adhyatmika guna are Atma guna. Adhyatmika guna are Atma guna. They are 6 in number. They are 6 in number. Ichcha dvesha sukam dukkam prayatna and buddhi. इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नाश्चेतना धृति. बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः. इच्छा डिजायर्स. कुछ तो इच्छा होता है, हर किसी को इच्छा ही होता है ना. अवर्शन, अभी झगड़ा किया तो उससे मैं 3 दिन बात नहीं करूंगा. अवर्शन. सुख हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस. एंड प्रयत्न मीन्स एफर्ट्स टू अचीव द गोल. एंड बुद्धि इंटेलेक्ट. बुद्धि इंटेलेक्ट. दीज आर 6 आत्मगुण और आध्यात्मिक गुण. दीज आर अबाउट 41 गुण. दीज आर ऑल अबाउट 41 गुणास explained by Acharya Charaka. Okay. Now we discuss clinical significance of guna in Ayurveda. Clinical significance of guna in Ayurveda. हम गुण पढ़ने से क्या क्या फायदा मिल सकता है मुझको, हमको क्या क्या हेल्प हो सकता है उससे हमको इन आयुर्वेद में. वैशेषिक गुण. वैशेषिक गुण. दीज आर विशेष गुण ऑफ द पंच महाभूत. दे हेल्प द वैद्य इन प्रत्यक्ष परीक्षा एंड अनुमान परीक्षा. While examining the patient, पेशेंट को क्या कर रहे हैं हम? एग्जामाइन कर रहे हैं. प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष मीन्स क्या? आंखों से देखता है ना, उसका आकृति का है, कैसा है, शरीर कैसा है, कॉम्पैक्टनेस, वर्ण, नॉर्मल कंडीशन एंड abnormal conditions. It is all known by the प्रत्यक्ष परीक्षा. and अनुमान परीक्षा. अनुमान परीक्षा, it is not directly known by the physician, but it is assessed by the Anumana Pariksha. It is assessed by Anumana Pariksha. Vaisheshika Guna helps the Vaidya in Pratyaksha Pariksha as well as in Anumana Pariksha. Now, Samanya Guna. Samanya Guna are used for the treatment aspect in the Chikitsa, which are responsible for Dhatu Ruddhi, increase of Dhatu. They are Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, Majja and Shukra. These are Sapta Dhatus. Okay. एंड धातु क्षय. धातु वृद्धि और धातु क्षय होना है तो सामान्य गुणज क्या है? रेस्पॉन्सिबल होता है. ओके. नाउ परादि गुणज. परादि गुणज हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज कंडीशन. परादि गुणज परापरत्व युक्ति संयोग विभाग, दे आर ऑल helpful in diagnosis of the disease because where they Dashavidha gunas are said in Ayurveda, they help in diagnosis of the disease. Paradi guna also comes under that. Okay. Not comes under that, some concept comes under that. Okay. Adhyatma gunas are helps the good conduct of the person. अभी आत्मा 6 गुणास है ना, ये सद्रुत फॉलो मीन्स आयुर्वेद में बताया है. सद्रुत फॉलो करने से आदमी क्या होता है? अच्छा बन जाता है. ये आध्यात्म गुण हेल्प्स इन गुड कंडक्ट ऑफ द पर्सन. दीज आर ऑल clinical significance of guna in Ayurveda. They may ask the question like this: define guna. Define guna.
निरुक्ति, लक्षण, टाइप्स, विथ क्लिनिकल application for 10 marks. Okay, for 10 marks, then you have to write these are all completed now. Okay, now we discuss gunas one by one. First, that is sartha guna. Sartha guna, they are 5 in number. How many? 5 in number. Introduction. These are also called as bhautika guna, vaisheshika guna, or vishesha guna. Sartha guna are also called as bhautika guna, vaisheshika guna, and vishesha guna. Okay, they are 5 in number. They are 5 in number. Nirukti. सार्थ शब्दादयो ज्ञेय, सार्थ शब्दादयो ज्ञेय, गोचरा विषय गुणाः. The gunas, the qualities which are perceived by the sense organs, perceived by the sense organs, they are vishesha gunas of pancha mahabhutas. They are called as sartha guna or vaisheshika guna. Okay, they are, I said they are 5 in number. They are महाभूतानिकं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणः. शब्द स्पर्श रूप रस गंध, these are 5 gunas, 5 qualities. शब्द is the quality of आकाश महाभूत, स्पर्श is the quality of वायु महाभूत, रूप is the quality of अग्नि महाभूत, रस is the quality of अप महाभूत, gandha is the quality of shita means prithvi mahabhuta. These are all 5 qualities of the pancha mahabhutas. These gunas are perceived by the sense organs, means sense organs. First one, shabda. It is the vishesha guna of akasha mahabhuta. First one, that is shabda. Shabda means sound. Vishesha guna of akasha mahabhuta, and it is also perceived by the shrotrendriya, ear. It is perceived by ear. Shabda bheda, they are varnatmaka and dhvanyatmaka. Varnatmaka means the sound it is produced from our vocal cords. अभी मैं बोल रहा हूँ, sound कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से? vocal cord से निकल रहा है ना. This is the sound produced from the vocal cords. That is varnatmaka. Dhvanyatmaka means the sound produced from the instruments. गिटार होता है, बजाता है, तबला बजाता है, वो सब क्या है? वो ध्वन्यात्मक है, sound produced from the instrument. This is about shabda. Now sparsha means touch. Sparsha means touch. Touch. The vishesha guna of vayu mahabhuta. It is the vishesha guna of vayu mahabhuta. It is perceived by the sparshan indriya. It is the perceived by the sparshan indriya. Sparshan indriya means skin. Okay. बेदार शीत उष्ण एंड शीतोष्ण. अभी हम किसी को टच कर रहे हैं, वो क्या, हर लोग शीत नहीं होते, उष्ण नहीं होते, और कभी कभी लोग होते हैं शीतोष्ण भी नहीं होते, neither too hot neither too not cool. These are भेद of स्पर्श. They are शीत उष्ण and शीतोष्ण. शीत means cold, उष्ण means hot, शीतोष्ण means neither too hot neither too cold. These three are types of sparsha. These three are types of sparsha. Sparsha Veda are also said by Acharya Charaka. Acharya Charaka. They are two: Indriya Samsparsha and Manasa Samsparsha. Indriya Samsparsha means physical touch, and Manasa Samsparsha means mental touch. These are two types of sparsha by the Acharya Charaka. Now we discuss that is Rupa. Rupa is vishesha guna of Agni Mahabhuta. Rupa is vishesha guna of Agni Mahabhuta. It is perceived by the Chakshurindriya. Chakshurindriya means eye. Okay, eye. It is vishesha guna of Agni Mahabhuta perceived by the Chakshurindriya. Tarka Sangraha. According to Tarka Sangraha, there are 7 types of Rupa. Means colors are said. They are
शुक्ल नील पीत रक्त, शुक्ल नील पीत रक्त, हरित कपिश चित्र, हरित कपिश चित्र, white, blue, yellow, red, green, brown and mixed. These are 7 types of rupa said by the Tarka Sangraha. Okay. Now the fourth one, that is rasa. Rasa is the Vishesha guna of Up Mahabhuta or Jala Mahabhuta. It is perceived by the Rasanendriya. Perceived by the Rasanendriya means tongue. There are 6 rasas are said. There are 6 rasas are said in Ayurveda. They are Madura Ambla Lavana Katu Tikta Kashaya. Madura Ambla Lavana Katu Tikta Kashaya. These are all responsible for Bala and Varna and Ayusha of the person. Ayusha of the strength of the person, complexion of the person and long life of the person. Long life of the person. These are all attained by the 6 rasas. They are Madura, Amla, Lavana, Katu, Tikta and Kashaya. Okay. Now the last one, that is Gandha Guna. Gandha Guna. It is the Vishesha Guna of Prithvi Mahabhuta. It is Vishesha Guna of Prithvi Mahabhuta. It is perceived by the Granendriya. Granendriya. It is perceived by the Granendriya. There are 2 types of smells. एक मन को अच्छा लगता है, एक मन को अच्छा नहीं लगता है. वही 2 टाइप्स है गंध का. वो है सुरभि एंड असुरभि. सुरभि मीन्स प्लीजेंट स्मेल. अभी देखो एक गुलाब का फूल है, बहुत अच्छा स्मेल हो रहा है, स्मेल आ रहा है, कहाँ से, दूर से आ रहा है, वो क्या है, सुरभि. प्लीजेंट, मन को हित देता है, वो कौन सा, सुरभि. एंड असुरभि, अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल. देखो हमारे कॉलेज का बाजू में एक गटर का नाला है, वहां से क्या आ रहा है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, असुरभि. दैट इज बैड स्मेल. दिस इज अबाउट सार्थ गुण. Now we discuss practical application of Sartha Guna. Practical application of Sartha Guna in Ayurveda. The jnana, the knowledge of Shabdaji Gunas are helpful in examination of the patient to check Hina Yoga, Mithya Yoga, Ati Yoga of sense organs. देखो ये शब्दादि गुणास है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, these are helpful in हीन योगा. मीन्स हीन योगा और अति योगा. हीन योगा, अयोगा, मिथ्य योगा एंड अति योगा. सेंस ऑर्गन्स है ना, वो प्रॉपर से काम कर रहा है या हाँ नहीं, ये किससे पता चलता है हमको, ज्ञान, नॉलेज ऑफ वैशेषिक गुण से पता चलता है. वो अच्छे काम कर रहा है कि नहीं, बहुत काम कर रहा है कि नहीं, एक्सेसिव यूज, लेस यूज, नो यूज. These are all known by the knowledge of Vaisheshika Guna. And also Samyak Yoga. Samyak Yoga is responsible for Swasthya Karana. अभी धातु साथ में है. सम्यक योगा मीन्स धातु साथ में. ओके, धातु साथ में. धातु साथ में is responsible for Swasthya Karana. It is responsible for healthy condition of the person. And Panchendriya are helpful for normal functions of the body. Sense organs है ना, बॉडी नॉर्मल से फंक्शन करना है तो सेंस ऑर्गन्स का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंस वैशेषिक गुण हैव मोर इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा. ओके, नाउ वी कंप्लीटेड वैशेषिक दर्शना. We move on towards now Paradi Guna. Acharya Charaka explained 10 Paradi Gunas. How many? 10 Paradi Gunas. These are mentioned by Acharya Charaka. These guna are helpful in successful treatment. चाहिए तो परादी गुण को समझना क्या है, जरूरी है. They are 10 in number. They are परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमतापि च संस्कारो अभ्यास इत्यते गुणज्ञेया परादयः. टोटल 10 in number. They are para, अपरा, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार and अभ्यास. Para means superior. Para means superior and also it is wholesome. Wholesome for the body. Wholesome for the body. Apara, it is inferior.
it is inferior and it is unwholesome, unwholesome for the body, unwholesome for the body. Para means which gives nourishment, which gives nourishment, that is good for health, that is called as para, that is called as para. Apara means that is unwholesome for the body, it doesn't give the nourishment, it doesn't give the nourishment, that is called as apara. Yukti, application, application or planning. Sankhya, numbering. संयोग, यूनियन, कॉम्बिनेशन. विभाग, डिसयूनियन. पृथक्त्व, सेपरेटनेस. परिमाण, मेजरमेंट. संस्कार, टेंडेंसी. एंड अभ्यास, रिपीटेशन, repetition. These are 10 paradi gunas explained by Acharya Charaka. Now para paratva, para and aparatva according to desha kala vayomana, desha kala vayomana, pakavirya rasadishu para paratve. This is explained by Acharya Charaka. Desha, desha is divided into Jangala desha and Anupadesha. Here Jangala desha is para, Jangala desha is para, Anupadesha is apara, Anupadesha is apara. Kala, time. Visarga kala, Visarga kala and Adana kala. Visarga kala is para, Visarga kala is wholesome and Adana kala is apara. Vaya, age. Yavana is para, Yavana is para and Ruddha is apara, Ruddha is apara. Mana, measurement. Less dosage in disease condition is para, less dosage in disease condition is para. More dosage is apara, more dosage is apara. Vipaka, Madura Vipaka is para, Madura Vipaka is para and Ambla and Katu Vipaka are apara. Virya, Shita Virya is para and Ushna Virya is apara. Here para and apara means, para means that is good for health, that is good for health, that is wholesome for the health. Apara means that is not good for the health and also it doesn't give the nourishment, that is called as apara. Rasa, Madura Rasa is para, Kashaya Rasa it is apara. Because Madura Rasa gives nourishment to the body, but Kashaya Rasa doesn't give the nourishment, it does the shoshana. Next, third paradiguna, that is yukti. It is accepted as guna as well as pramana, it is accepted as guna as well as pramana. Yuktischa yojana yatu yujjate, yuktischa yojana yatu yujjate. The proper application with proper planning, प्रॉपर एप्लीकेशन विथ प्रॉपर प्लानिंग. देखो एक फिजिशियन है, अभी एक उसको क्या चाहिए, मेडिसिन देना चाहिए पेशेंट को, मेडिसिन देना चाहिए पेशेंट को. ये प्रॉपर एप्लीकेशन ऑन, अभी देखो ज्वर के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन, ज्वर का मेडिसिन ही देना पड़ेगा. कितना क्वांटिटी में देना है, कितना क्वांटिटी, डोसेज एंड कौन सा टाइम में देना है, टाइम एंड ड्रग्स मेडिसिन based on his yukti, based on physician yukti, he can plan for the treatment to cure the disease, that is yukti. The fourth one is, that is sankhya. Sankhya syat ganitam, which means to count, which means to count. It gives perfect knowledge about the things, it gives perfect knowledge about the things in numbering. नंबरिंग देखो त्रिदोष है, वात पित्त कफा. वायु पंचमहाभूत है, पृथ्वी पतेज वायु आकाश. सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्ति मज्ज एंड शुक्र. एंड पंचकर्म है, वमन विरेचन
आस्थापन बस्ति, अनुवासन बस्ति and नश्य. संयोग, the fourth one, that is संयोग. संयुक्त व्यवहार हेतुः, संयुक्त व्यवहार हेतुः संयोगः. That which is responsible for, that which is responsible for union of the things, union of things are dravya, that is called as sanyoga, that is called as sanyoga. It is अनित्य. अभी देखो दो ऑब्जेक्ट से यूनियन हो गया, वो परमानेंट नहीं है वो यूनियन. अभी यूनियन हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी क्या होगा, यूनियन हो गया. ये परमानेंट है नहीं है, ये यूनियन डिस यूनियन होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा. दैट्स वाई संयोग इज अनित्य. इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट एटर्नल. भेद ऑफ द संयोग. चरक आचार्य चरक सेड द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज एंड एक कर्मज. द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज एंड एक कर्मज. द्वंद्व कर्मज मीन्स यूनियन ऑफ टू मूवेबल थिंग्स, टू मूवेबल थिंग्स. देखो एक मूवेबल थिंग है, एक मूवेबल थिंग है, ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, ये दोनों क्या हो गया, यूनियन हो गया. यूनियन ऑफ टू मूवेबल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज द्वंद्व कर्मज, द्वंद्व कर्मज. एंड सर्वकर्मज मीन्स यूनियन ऑफ मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स. मूवेबल अभी मूवमेंट में होता है, आके क्या होता है, यूनियन हो जाता है, वो क्या है, सर्वकर्मज. एंड एक कर्मज, यूनियन ऑफ वन मूवेबल थिंग टू द अदर, यूनियन ऑफ वन मूवेबल थिंग टू द अदर. दिस इज अबाउट संयोग. ओके, नाउ द सिक्स्थ परादि गुण, दैट इज विभाग. विभाग मीन्स separation or disunion, or disunion. निरुक्ति ऑफ विभाग. संयोग नाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्य वृत्तिः. The factor which destroys the संयोग, the factor which destroys the संयोग, संयोग नाशको गुणो विभाग. The factor which destroys the union or संयोग, that is called as वियोग, that is called as वियोग or विभाग, disunion. Okay, synonyms of विभाग, विभक्ति, वियोग and भागशोग्रह. These are पर्याय of विभाग, these are पर्याय of विभाग. Types of विभाग: द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज एंड एक कर्मज. द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज, एक कर्मज. द्वंद्व कर्मज मीन्स bilateral disunion, bilateral disunion. एंड सर्वकर्मज मीन्स disjunctional disunion, disjunctional disunion. एंड एक कर्मज मीन्स unilateral disunion, unilateral disunion. These about the vibhaga. Now we discuss पृथक्त्व. पृथक्त्व मीन्स डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, सबसे अलग है. ये क्या है, सबसे अलग है. ये कहता है ना, ये बच्चा सबसे अलग है, इसका डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ऐसा हो कहते हैं ना. हम क्लास में कहते ये बच्चा लोगों से अलग है, बहुत अलग है, ऐसा है ये पृथक्त्व. पृथक्त्वम, पृथक्त्वम स्यात् संयोगो वैलक्षण्यम अनेकता. It is the quality, it is the quality by which one substance is separated from the other. It is the quality, from that quality we can separate this from the other, we can separate this from the other. That is पृथक्त्व bhava, that is पृथक्त्व distinguishing factor, distinguishing factor. Example, Haritaki is different from the Amalaki, Haritaki is different from the Amalaki. And Mahisha is, buffalo is different from Varaha, means fig. अरे महिष अलग है और वराह अलग है, हरितकी अलग है और अमलकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना. उसको क्या कहते हैं हम, पृथक्त्व भाव, पृथक्त्व भाव, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर. नाउ वी डिस्कस परिमाण. परिमाण मीन्स मेजरमेंट, परिमाण मीन्स मेजरमेंट. मान व्यवहार, मान व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम. मान व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम. मान इज द अनकॉमन कॉज ऑफ रेफरेंस ऑफ measure. To measure, to measure.
There are four types of mana are said by Tarka Sangraha. They are Anu, Mahat, Dirgham and Rusvam. Anu means minute, Mahat means gross, Dirgha long, Rusva short. These are four types of mana said by the Tarka Sangraha. And Yautavamana, Dhruvayamana, Payyamana. Yautavamana, Dhruvayamana and Payyamana. These are said in Vaishajya Kalpana. Vaishajya Kalpana. Measurement of weight, measurement of length and measurement of volumes. This about the Parimana, measurement. Now we discuss Samskara. Samskaraha karanam matah. Samskara karanam matah. It is the acquired quality. It is the acquired quality of substance. देखो एक बात है, अरे वो बहुत जिद्दी है यार, वो जेनेटिक्स में होता है ना क्वालिटी, क्या क्वालिटी इनसाइड होता है ना, उसको क्या कहते हैं? संस्कार. इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. अरे कुछ भी चेंज कर सकते हो, बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं हम. ओके, इट इज़ द अक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस. इट इज़ acquired inner quality of the substance, that is called as samskara. That is called as samskara. Again it is three types: vega, bhavana and sthiti stapaka. Vega, bhavana and sthiti stapaka are types of samskara. Okay, now the 10th paradiguna, that is abhyasa, means repetition. Bhavabhyasanam abhyasah sheelanam satata kriya. The continuous practice, it is called as abhyasa. It is called as abhyasa. Sheelana and satata kriya. Sheelana and satata kriya means it is a continuous practice. Practice makes the man perfect, right? It is all about paradigunas. Okay, now we discuss practical application of paradiguna. Para and apara. Para means wholesome and apara means unwholesome qualities are helpful in to decide aushadhi is good for health or not good for health, and ahara dravya is good for health, not good for health. It is known by the para and apara quality. And proper planning and with proper application. It is known only by the yukti. And abhyasa, continuous practice. एक सर्जन है, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वो स्किलफुल होने के लिए, ये स्किलफुल सर्जरी करने के लिए वो क्या करना चाहिए? पहले सतत अभ्यास, कठिन परिश्रम, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना चाहिए. प्रैक्टिस विथ द कैडावर, देन ओनली ही बिकम द गुड सर्जन. ओके, दिस इज अबाउट द paradiguna. Okay, now we discuss adhyatma guna. They are also called as atma guna. Adhyatma guna are also called as atma guna. They are 6 in number. Ichha, dvesha, sukam, dukkam, prayatnaschetana, drutihi, buddhihi, smritirahankaro, lingani paramatmanah. Ichha, dvesha, sukha, dukkha, prayatna and buddhi. These are 6 atma gunas said by Acharya Charaka. Ichha means desires. Dvesha, aversion. Sukha, happiness. Dukkha, unhappiness. Prayatna, effort. And buddhi is intellect. These are 6 atma gunas are said by Acharya Charaka. Okay, now ichha kamaha. Desire is ambition to get the knowledge. Desire is ambition to get the yatavad jnana, to get the truthful knowledge. That is ichha kamaha. It is very important for MCQ questions. Okay, MCQ purpose is very important, this concept. Ichha kamaham. 8 folds of ichha are mentioned. They are kama, sexual desire,
सेक्सुअल डिजायर, अभिलाषा डिजायर टू टेक फूड एंड ड्रिंक्स, इसको क्या होता है, कभी खाने का मन होता है, कभी खाने का पीने का, खाने का पीने का। राग डिजायर अबाउट द ग्रीड, कलेक्ट करना है, मनी कलेक्ट करना है, इतना कलेक्ट करना है कि बहुत सारा कलेक्ट करना है, ग्रीडी होता है बहुत। संकल्प डिजायर टू अचीव द गोल इन द लाइफ, एंड कारुण्यम डिजायर टू हैविंग द काइंडनेस। उपदा डिजायर टू डिसीव द अदर्स, दूसरों को निंदा करने का उसका डिजायर होता है। एंड भावम हिडन डिजायर, हिडन डिजायर किसी को नहीं बोलता है पर अंदर ही अंदर क्या है उसको डिजायर्स है। वैराग्यम रिजेक्टिंग समथिंग, अरे वैराग्य हो गया है, उसको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वैराग्य उसको बोलते हैं हम वैराग्य। दीज आर 8 फोल्ड्स ऑफ इच्छा, 8 फोल्ड्स ऑफ इच्छा। नाउ द्वेष, क्रोधो द्वेषः, क्रोधो द्वेषः। हियर इच्छा is get, it is seen only by the when the combination of atma and manasa, then only we see the desires. Okay, now dvesha, krodho dveshah, aversion is said as krodha, aversion is said as krodha. It is only known by the rajo guna, rajas guna. Okay, it is knowledge of pain, it is the knowledge of pain, कितना दुख हो रहा है उस किससे पता चलता है, क्रोध उसको एंगर कितना आ रहा है उससे पता चलता है, उसको पेन कितना हुआ है। देन सुख, सुख मीन्स अनुग्रह लक्षणम सुख, अनुग्रह लक्षणम सुख, that is favorable to the person, that is favorable to the person, that is called as sukha. Temporary and moksha is permanent, permanent happiness, permanent happiness and temporary happiness. Sukha sadhyak arogyam, happiness is the indication of good health, happiness is the indication of good health. अच्छे रहे तो अच्छे हंसते हंसते रहते हैं ना हम। एंड नाउ दुख, अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीयम गुणो दुखम, दैट इज अनफेवरेबल टू द पर्सन, that is unfavorable to the person, that is unwholesome to the person, that is dukkha, unhappiness. Adhisthana of dukkha are manas, deha and indriya, these are adhisthana for dukkha, these are adhisthana for dukkha. Now prayatna, prayatna means efforts, krutihi prayatnah, the action it is said as prayatna, the action it is said as prayatna. The last one, that is buddhi, sarva vyavahara hetur guno buddhir jnanam, it is the knowledge which is responsible for all the activities, it is the knowledge that is responsible for the all the activities, that is called as buddhi. Smriti and anubhava, these are synonyms of buddhi. This is about the atma guna. Okay, now we discuss practical application of adhyatma guna, practical application of adhyatma guna. Adhyatma guna are responsible for good health and good mental condition of the patient, and they leads to arogya, health, and roga, disease, sukha, dukkha, happiness and unhappiness. It is all, these are all are influenced by the adhyatma gunas, and adhyatma gunas are explained in sadruta, they are explained in the concept of sadruta, and they are responsible for prajna aparada, they are responsible for prajna aparada. Hence these adhyatma gunas are have effect on manasika rogas, mental conditions are influenced by the adhyatma gunas. This is about the practical application of adhyatma gunas. This is all about the adhyatma guna. Okay, today we stop here. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लो. For handwritten notes, join my Telegram. If you have any doubts, comment below. Follow for more Ayurveda content. Thank you.